I JBN Dr. Brajraj Singh Chauhan, Associate Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Program B.Ed 4th Sem, Course Understanding the Self, and session of today is what is concentration? Concentration, uh, definition of concentration is to concentrate is to direct your mental powers of your efforts toward a particular activity, subject, or problem. This is the definition of concentration. Now, something different. What is memory? Memory is the ability to remember information, experiences, and people. This is the memory. Then, what is the difference between memory and concentration? Concentration and memory work hand in hand. We generally practice only skill that improve our memory but never look at factor that enhance concentration. Good concentration will enhance memory. Or in other words, you can say if you have good concentration, then you can memorize a lot in short span of time. So, for being good memory, it is prerequisite to have good concentration. So, the art or practice of concentration is to eliminate distraction and focus on the task at hand. Do you find that you read through material and suddenly discover that you have no idea about what you have just read? Or if you attend a lecture and have difficulty paying attention to what is being said? These things, it is due to lack of concentration. If our concentration is good, we can listen, or listening is the interpretation, hearing is sensation. If we have listened, listening, यह लिसनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हमने जो कुछ भी सुना हो उसको इंटरप्रेट करने की, उसको अपने शब्दों में बताने की हम कैपेबिलिटी रखें, दैट इज लिसनिंग. सो अगर हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा तभी हम लिसनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज लिसनिंग नहीं होगी, हियरिंग होती है ना. और हियरिंग इज जस्ट सेंसेशन, और you cannot interpret whatever you listen. Does your mind fill from one thing to another? Do you have trouble focusing on something for more than a few minutes? कहने का आशा ये है कि अगर हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारी एक्टिविटी पहले से ही चल रही हैं और उसी दौरान हम कोई और एक्ट कर रहे हैं, या लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो उस दौरान एक्टिविटी फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि एक साथ में माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, और उन थॉट प्रोसेस को हम कंट्रोल कर लें तभी हम कंसंट्रेशन की स्थिति में हो पाएंगे. नाउ इफ़ यू वेंट टू द जिम एंड ट्राई टू फिट वेट्स ओनली to find that your arms and legs are weak and flabby, then what do? You would start exercise to strengthen your muscles, right? अगर शरीर के अन्य अंग हमारे कुछ कमज़ोर हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं. जस्ट सिमिलर, अगर मेंटल एक्टिविटी को हमें स्ट्रेंथन करना है या कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिससे हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. जस्ट लाइक द मसल्स इन योर बॉडी, योर ब्रेन टू नीड्स एक्सरसाइज टू टोन अप इट्स स्ट्रेंथ ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन.
Go to your study area and get settled. Read a large section of the textbook belonging to your least favorite subject. Note the time you start. Make an effort to learn and recall an information you read. Note the time at which you find your mind beginning to wander. No matter how little, this will be your maximum concentration span. You will observe that your concentration span varies depending on the subject, how you feel, your mood, and amount of rest that you have taken, as well as your eating habits. The study beyond your concentration span is ineffective. You may be still reading, but your brain will be losing most of the information it takes in. Way to increase concentration: stick to routine and study schedule. Study in a quiet environment. For a study break, do something different from what you have been doing, and in a different area. Avoid daydreaming by asking yourself questions about the material. As don't try to mix work and play. Before lectures, look over the notes of the previous lecture and read the course material pertaining to the lecture so that you can anticipate the main idea that the teacher will cover. So, outward interesting during the lecture to self-motivated internal interest. Uh, Resist distractions by sitting in front of the room away from disruptive classmates and by focusing on the teacher by listening intensely and note taking. कहने का आशय है कि जिस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं या एक काम कर रहे हैं उस वक्त माइंड में कोई दूसरा थॉट नहीं चलना चाहिए। कहने का आशय है एक काम को हम एक ही समय पे करें और उसको एक ही समय पे सोच रहे हों, अन्य कोई थॉट्स, अन्य कोई बात दिमाग में उस समय नहीं चल रही होगी। ये हमारी प्रैक्टिस है, हम किस तरह से अपने माइंड को कंसंट्रेट रख सकते हैं। These are very simple and easy method and should be practiced very religiously. It will become a habit in the course of time. धीरे धीरे यही चीज़ें हमारी हैबिट्स बन जाएंगी और this will be the definitely help to your concentration better. So I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it very soon. Thank you very much.